अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फूड फॉर फूडीज। आज हम पालक चिकन बना रहे हैं। स्पिनच इज़ ए वेरी डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस वेजिटेबल, पर इसको कुक करने में फ्यू एक्स्ट्रा स्टेप्स लगते हैं विच आर टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। तो इस वीडियो में आप पालक को कुक करने के साथ इसको स्टोर एंड फ्रीज भी करना सीखेंगे। मगर ये ज़बरदस्त पालक चिकन की रेसिपी देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक एंड शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड।
ये लीजिए, हमारी मज़ेदार पालक चिकन रेडी है। हम इसको कोरिएंडर एंड क्रीम से गार्निश करेंगे, योगर्ट, सैलड एंड रोटी के साथ सर्व करेंगे और टेस्ट करेंगे। Mashallah, chicken is properly cooked, it's soft and tender, and palak is simply out of this world. इसका aroma salivating है, texture soft and velvety है, and flavor is slightly tangy, spicy and creamy. मेथी and soya ने पालक के flavor को enhance किया है without overpowering it, और dish में oil perfect quantity में है. Palak is a great source of nutrients which are good for vision, heart and bones, but इसकी time consuming prep work से लोग घबराते हैं. So don't worry, आप मेरी रेसिपी फॉलो करें और पालक को बल्क में बॉयल, ग्राइंड एंड हाफ डन करके easily 2 to 3 months तक फ्रीज कर दें. फिर जब दिल करे धो करें एंड कुक कर लें. आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट करें, इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी. आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.